फूड इंडस्ट्री आजकल आईटी इंडस्ट्री से जुगलबंदी कर रही है। ये मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ERP के बलबूते पर आसमान छूने के प्रयास कर रही है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चाहे वो बासमती राइस हो, मिल हो या पैकेज्ड फूड, सभी के आंगन से एक ही आवाज आ रही है, ERP SAP। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ते अपने कदमों को और मजबूती देना चाह रहा है। I think the biggest value that any food processing company or any company that takes agro products and agro produce and processes it, packages it and sells it in the market. What's most critical is to be able to integrate all their functions, particularly on purchase side and sales side. On one side they deal with consumers, on the other side they deal with a very not so organized sector of supplies. So they need to have systems which give them that control and visibility so that they can enhance their efficiency in those areas. So anyone who is processing food would benefit from SAP by having an integrated solution around purchase, production planning, sales and distribution. भारत की फूड इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। घरेलू मांग ही नहीं, निर्यात भी बढ़ रहा है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने, मार्केट का विस्तार करने और प्रोडक्शन लाइन को अच्छी तरह नियंत्रित करने के लिए ERP अपना रहे हैं। We have implemented SAP just to ensure that the control is there on the business, because our plants are very remotely based, because we have to be near the fields, near the paddy growing areas, and we are sitting here in Delhi and controlling everything from here, and then the markets are spread across the country and across the globe, I would say, because we are exporting it as well. So we just to ensure that the everything is coordinated and it's done in a systematic manner, we went ahead and implemented SAP. We have implemented SAP Mandi module, which is again it controls our purchases right from the scratch. When at the time of auction, the monitoring starts when the paddy is being auctioned in the market, and till the time it's processed, we keep continuous control on that, and it's always monitored in terms of quality, it's in terms of the continuous fumigation or anything. It's all controlled through this ERP system. हर फूड प्रोसेसिंग इकाई की अलग अलग मांग होती है, इसलिए ERP पूरी तरह कस्टमाइज्ड होता है। ERP कंसल्टेंट ग्राहक फूड प्रोसेसिंग कंपनी की आवश्यकता है और इसके ऑपरेशंस सभी की मैपिंग करते हैं और फिर उसके बाद उसके लिए विशेष ERP SAP सॉल्यूशन तैयार करते हैं। SAP एक प्रोडक्ट है जिसमें सारे फीचर्स और दुनिया भर के बेस्ट प्रैक्टिसेस SAP ने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। हमें ये करना होता है कि we look at the specificities of a particular company, their business processes in different areas and map the solution according to those business processes. Example के लिए let's say purchase area. So one has to understand that whether this company purchases from domestic market, from mandis, or from organized supplier base, or from let's say import market. And depending on that, we have to configure the solution accordingly so that it can facilitate that process, it can facilitate the statutory compliance related with that process.
एप्लीकेशंस को तैयार कर उनसे ग्राहक कंपनी के एग्जीक्यूटिव को सॉल्यूशन से अवगत कराया जाता है और फिर कंपनी के सिस्टम्स में इंस्टॉल कर दिया जाता है। Adoption of an application like SAP, the recommended part is that it should be implemented in 12 to 16 weeks time. So normally with all the phases of implementation, it takes 12 weeks to 16 weeks time. सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आईटी का दामन पकड़कर आसमान छूने की कोशिश कर रही है। It's time now for a short break. Stay with us.